में। CNBC आवाज मास्टरप्रेन्योर सीजन 3 के विनर स्पेशल में आपका स्वागत है। CNBC आवाज देश का नंबर 1 बिजनेस न्यूज चैनल पिछले 3 सालों से आपके सामने ला रहे हैं वो टैलेंट जिनके बिजनेस आइडियाज में है दम। मास्टरप्रेन्योर के जरिए CNBC आवाज की ये कोशिश है कि उन एंटरप्रेन्योर्स को सम्मानित करें जो अपनी कड़ी मेहनत से अपने व्यवसाय को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाने में सफल हो गए हैं। Entrepreneurs in India actually today face the major problem of visibility. So I think Masterpreneur event is giving the maximum visibility today. So I think that's already amazing from the CNBC Awaaz people. So another improvement as such for Masterpreneur, I think some more reach to more entrepreneurs would be one stuff that I would prefer. मास्टरप्रेन्योर देश के एंटरप्रेन्योर्स को नई दिशा देने का एक जरिया है, जिससे लोगों को उन होनहार उद्यमियों के बारे में जानने का मौका मिलता है जो पूरी लगन और मेहनत से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कामयाब हैं। और साथ ही CNBC आवाज के द्वारा उठाए गए इस कदम से देश के उन छोटे से छोटे उद्यमियों को एक साथ एक मंच पर लाने का अवसर मिलता है। Masterpreneur experience has been the best so far for me. So the jury, I think I'll have to make a special mention. So I had an excellent experience. We started off with a jury who were all investors of different sizes. So it started off with small funding people as judges, and then moved on to VCs, equities in the final rounds, and the questions that were posed out to us were different in different stages, even though our company was the same and the pitch was same. So I think that fine-tuned the pitch as well, and also fine-tuned the answers that we were giving, and also gave a clarity of thought to a lot of stuff that we had in mind. There were also some workshops launched by CNBC which was highly useful. I think it was amazing, the overall organization and the team behind it. Extremely organized, extremely helpful, and had a lot of fun as well as learning into it. I think it was great. कहते हैं जिसका हौसला बुलंद हो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, और ऐसा ही एक नाम है SP रोबोटिक्स का, जो आज अपने काम से देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी उड़ान भर रही है। SP रोबोटिक्स की शुरुआत हुई भारत के दक्षिणी राज्य चेन्नई से। SP Robotic Works was launched in 2012. So that's when we kick-started everything. Before that, myself and my co-founder Pranavan, we both did our engineering in Anna University. So from 2008, we've been doing a lot of robotics. We've traveled to a lot of colleges, universities in India and abroad. All of this gave us a lot of exposure, and it also triggered a thought like, why not give this exposure to someone much younger, like someone who's in the school itself, so that they can have much more time, to experiment and research and become something much better than what we are today. So that is how we started all this Kid Robotics and SP Robotic Works. We started selling things online, and it gave us a lot of boost from the audience part, also from the customer point of view also. So that's how we started SP Robotic Works, with the prime aim of educating school and college students with skill development, with practical learning rather than the theoretical study that they have. SP रोबोटिक की स्थापना साल 2012 में हुई। इस इंस्टीट्यूट को नए मुकाम पर ले जाने के लिए स्नेहा को साथ मिला प्रणवन का। चेन्नई में स्थापित इस इंस्टीट्यूट में 8 साल से 17 साल तक के बच्चों को रोबोट के बारे में शिक्षा दी जाती है। इस इंस्टीट्यूट के पीछे डायरेक्टर स्नेहा प्रिया और प्रणवन का मकसद है कि वो देश के होनहार बच्चों को एक नया प्लेटफॉर्म दें और उनके हुनर से देश को तरक्की की ओर ले जाएं। We've grown a lot. We started with a very small room with 5 to 10 students, and training them with a very raw kit which was not
highly sophisticated, etc. So now we have about we have catered to more than 10,000 kids, and we have a center specialized with robotics lab setups, etc., primarily for the school children to come and learn there. And the kits are all sophisticated now, completely designed for protection as well as raw experiments. We saw the evolving of the kit without the loss of the experiment quality. So I think that is one thing that is amazing, and we have got a lot of recognitions from a lot of nationalized newspapers and channels like CNBC, and yes, it's been great. We would like to introduce ourselves as a company which shapes up future India, future generation of India, of course. So over years, as you mentioned, in 2 years of span, we would be looking one of the leading training company on technical education. इंस्टीट्यूट की शुरुआती दौर में डायरेक्टर स्नेहा प्रिया और प्रणवन के सामने कई सारे चैलेंजेस भी आए, लेकिन उन्होंने सभी चैलेंजेस का मुकाबला डटकर किया। 4 बच्चों के साथ शुरू हुई एसपी रोबोटिक इंस्टीट्यूट में आज 400 से भी ज्यादा बच्चे शामिल हैं, जो स्कूल के साथ साथ रोबोट बनाने के बारे में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे देश विदेश के कई स्कूल और कॉलेजेस के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और उन्हें अपने इस काम के लिए नवाजा भी जाता है। Challenges, it was basically the statutory challenges was there, since both of us are not of business backgrounds. So we had the initial glitches of how to start, where to start, whom to talk to, and those kind of small issues. But since we were a technical background, the technicality side and the customer delivery side, we did not have much of a problem. We need to change something in the education. I mean, we need to focus in practical way of education. So that's why we start from the scratch and also start from the age of 8 to 17. So once we implement in the age of young age, so we can change something. So we start with age 8. So we have a course module called beginner, intermediate, advanced and expert. अब यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे एसपी रोबोटिक इंस्टीट्यूट और रोबोट के बारे में कुछ खास। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मास्टरप्रेन्योर सीजन 3 के विनर स्पेशल एपिसोड में, जहां हम रूबरू करा रहे हैं आपको एसपी रोबोटिक्स के स्नेहा प्रिया से और साथ ही जान रहे हैं कि कैसे बनाए जाते हैं रोबोट्स और क्या है इन रोबोट्स का फायदा भविष्य में। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की ये वो शाखा है जिसके तहत रोबोट की डिजाइनिंग, उनका अनुरक्षण, नए एप्लीकेशंस का विकास और अनुसंसाधित जैसे काम सम्मिलित किए जाते हैं। रोबोटिक्स में मैनिपुलेशन और प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। एसपी रोबोटिक इंस्टीट्यूट में 8 साल से 17 साल तक के बच्चों को रोबोट्स बनाना, रोबोट्स का विकास और उपयोग करने के लिए नई तकनीक के बारे में शिक्षा दी जाती है। इस कोर्स में शामिल है डिजाइन, ऑपरेशन, सिस्टम मेंटेनेंस और रिपेयरिंग। एसपी रोबोटिक की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर पढ़ने वाले सभी बच्चों को खुद से अपने प्रोजेक्ट का डिजाइन बनाना पड़ता है और फिर उस डिजाइन पर रोबोट तैयार करवाया जाता है। Robotics is the future, so everybody knows that. So we right from farming to space exploration, everything is going to become robotics in the future. So with our course, the children that we are catering to will not be losing the race of competition, and they will be a part of the researcher. So they will not. I don't want the kids of the future generation to become assemblers and workers. And just somebody who operates a robot. Rather, they should be somebody who does that robot, who researches and invents or innovates a robot. So that is what we are aiming at. हमारा देश तेजी से विकास कर रहा है और इसमें सबसे बड़ा सहयोग बच्चों की पढ़ाई से है। आजकल बच्चे स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ कुछ नया करने की चाह रखते हैं और इसी का अहम हिस्सा है रोबोट की पढ़ाई, जो बच्चे खेल खेल में रोबोट से संबंधित जानकारी ग्रहण कर लेते हैं।
रोबोट एक ऐसी स्वनियंत्रित रिप्रोग्रामेबल मशीन है जिसे हम कई कारणों के लिए यूज कर सकते हैं। आज के दौर में विभिन्न कामों में रोबोट्स का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ते जा रहे हैं। Well, in today's scenario, you yourself can see everything is every labors are replaced with robotics technologies. We are basically looking future robotics would replace some manual, repetitive works of humans, which is boring works for humans. The robot can replace those humans, and humans can get a better work or positions in some companies. The children are completely, their conceptual thinking has changed a lot. Now a child no more goes and stands and say, hey, that thing is exciting. He rather says, this is how that thing might be working. This is how it will be inside that particular component. So he has now the insight to think further, move a step, more inside into something and see everything technically and understand the fundamentals. I think that will give a lot of difference to the future generation. It's going to create a revolution as such. When a child is thinking at this age like this, then how will he think at when he is grown up? So I think that will be amazing for me also to see. 2012 में शुरू हुए एसपी रोबोटिक में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसका मुख्य कारण है पेरेंट्स के बच्चों के प्रति जागरूकता। Parents, I think today have all become well exposed to the fact that theory study will not take their children to a much higher level. So the practical education is a must, I think spread out everywhere. So every parent knows that today. So with that, every parent is now today ready to send their child for some kind of a practical education. So why to us? We provide a complete service to them. So it's not just a particular course wherein they just study and they just leave off. And it's not something like that. We give continuous support. We continuously pull the child and keep him in contact with the practical thing that he or she has learned. So I think that is one thing that has driven a lot of parents to us today. अपने बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के अलावा रोबोट्स जैसे सब्जेक्ट्स पर भी जानकारी मिले, इसके लिए पालक अपने बच्चों को एसपी रोबोटिक्स में भेजते हैं, जिसके जरिए बच्चों को रोबोट्स की जानकारी मिले। इस इंस्टीट्यूशन के जरिए बच्चों को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता है। I think conceptually it's a very good idea because kids are getting practical exposure, right? So I think what they read in school they'll be able to relate it a lot better with the hands-on exposure. So I think it's a fantastic concept. They are very passionate about what they are doing and they try to inject this passion into the kids as well. बच्चों का वो जो असर है उसके ऊपर कि वो उनका इतना केयर लेते हैं कि वो उनका जो सपोर्ट चाहिए तो काफ़ी उसको सपोर्ट देते हैं और उनके जो इंटरेस्ट के हिसाब से उनको थोड़ा गाइडेंस भी देते हैं। जो नॉलेज इस ट्रेनिंग में लेते हैं एसपी रोबोटिक्स, वो नॉलेज तो उनके इंजीनियरिंग पढ़ने के और ये ट्रिपल में पढ़ने उसके लिए बहुत यूजफुल होगा। एसपी रोबोटिक में पढ़ रहे बच्चों ने अपने हुनर से पेरेंट्स के साथ साथ स्कूल, देश विदेश के कई कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में लोगों का दिल जीत लिया है। उनके द्वारा बनाए गए रोबोट्स को सभी ने सराहा है और इसके चलते उन बच्चों को कई अवार्ड से नवाजा भी गया है। Recent news happening at our center, whatever the students achieving in their national level competitions and intra-level competitions, whatever they are achieving, it is published through the app so that the parents would know what's happening and what students can achieve at this young age. अभी रिसेंटली हमें MIT गए थे तो उधर हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट रोबोट्स बनाने के लिए सोचने मिली और मैंने एक अच्छा सा चेसिस भी बनाया था। रोबोट डिजाइनिंग के अंदर जो हमारी तरफ से असिस्टेंट हो सकती है वो हमें उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में वो लोग जाते हैं कॉम्पिटिशन्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। कॉम्पिटिशन्स जो है वो कॉलेज लेवल के हो गए जिसमें से IITs, NITs एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन सारे के सारे इंक्लूडेड है। तो उसके लिए भी कुछ तैयारी होती है। एवरी 4 months वी आर कंडक्टिंग आवर ओन गेम्स, रोबो गेम्स, so that it can be helpful from that to practice and encouragement भी होता है, एक्सपीरियंस भी मिलता है कैसे उनको आगे जाके खेलना है, क्या करना है।
I've been involved with Kid Robotics for the past 3 years, and they have really helped me to bring out my talent and build robots. So recently I went to Singapore for a competition, and that really helped me to gain exposure and made me understand the different types of robots and how it is at the international level. So if you see, it's totally different over there when you compare it to local competitions here. अब तक आपने देखा एसपी रोबोटिक्स में कैसे बच्चों को रोबोट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अब हम देखेंगे कैसे बनाए जाते हैं रोबोट्स। 4 साल पहले शुरू हुए इस इंस्टीट्यूट में रोबोट्स की पढ़ाई के अलावा रोबोट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी होती है और इसके लिए सेंसर्स, बैटरीज, वायर्स और मोटर्स जैसे कई सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। As design and manufacturing, we have our own production team, which based on the feedbacks, based on the trainers' inputs, as well as our own R&D team, we every quarter we sit and decide on what all revisions can be given for that particular level, and the kit is completely designed, and we contract manufacture the kits, and quality tested, assembly, packaging, everything is done in-house within our team today. So I think that solves a lot of issues of costing. Since it's made in India, we can give it at a very good cost to the customers as well. Including the education part also, we thought of starting the store where we want to manufacture our own products, which is especially used to construct robots, doing projects and all. अब वक्त हो गया है एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे रोबोटिक्स के साथ एसपी रोबोटिक की फ्यूचर प्लान के बारे में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है इस खास एपिसोड में। हम जान रहे हैं एसपी रोबोटिक्स के बारे में, जहां बच्चों को रोबोट्स बनाने की शिक्षा दी जाती है। आजकल रोबोट्स वो सारी चीजें करते हैं जो एक मनुष्य करता था, जैसे सर्जरी करना, बारूदी सुरंग हटाना, बम निष्क्रिय करना और ऐसी कई चीजें। We want to enter into the automation sector. We want to be into the autonomous automobiles. We are also working on telepresence robot, which will be a clone for a human being. We can be in 2 places. So we have many ideas to experiment. Kid Robotics is a part of it. जिस तरह दिन प्रतिदिन रोबोट्स की मांग बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए रोबोटिक्स एक शानदार और चमकदार करियर बनता जा रहा है। उद्योगों में रोबोट्स का उपयोग निर्माण प्रक्रिया तेज करने के लिए किया जाता है। औद्योगिक रोबोट्स द्वारा वेल्डिंग, पेंटिंग और मशीनों में कल पुर्जे लगाने का काम किया जाता है। रोबोट्स असेंबलिंग, कटिंग और ऑटोमोबाइल्स के विभिन्न पार्ट्स को लगाने का भी काम कुशलता पूर्वक करते हैं। एसपी रोबोटिक्स ने धीरे धीरे अपने कामों को एक नई दिशा देने के मकसद से रोबोट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करना शुरू कर दिया है और ये मैन्युफैक्चरिंग बैंगलोर में होती है। इस कंपनी द्वारा बनाए गए रोबोट्स का मार्केट में सप्लाई भी होने लगा है और उनके हर एक प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। कंपनी ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई है ताकि आने वाले समय में एसपी रोबोटिक्स एक बड़ा ब्रांड बन सके। Right now, from SP Robotic Works, we are supplying robotic components for school students, college students. So college students is like all over India we are supplying, and in industrial, for industrial professionals we are also supplying, and right now we are entering into international shipment. So we are also supplying to countries like UK, Dubai, Singapore and Nepal. We have our own products in robotics field. So we have our own motor drivers for driving the robots, and this motor drivers is wholly manufactured by us. For the initial of the productions for these motor drivers, we need to fabricate the PCBs, and the PCB has to be designed. The PCB designing will be done here and it will be fabricated outside. Once the fabricated PCBs has came, the assembling part of the PCBs will be done here. For assembling section, we need to have some electronic components like capacitors, resistors and all the other electronic components. We used to manufacture, we used to assemble it as a whole PCB. So this is the PCBs of all the assembling part has done.
So once all the assembling is done in this PCBs, it will be going into the testing department. So all the testing will be done in that in here. Once the testing is done and the quality check is done, it will be packed and it will be sent to the shop area for selling. अपनी बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के मकसद से काम कर रहे एसपी रोबोटिक ने एक और नया कदम उठाया है और वो है बच्चों को रोबोटिक्स के बारे में ऑनलाइन शिक्षा देना। इसके माध्यम से देश और विदेश से बच्चे घर बैठे रोबोटिक्स का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। एसपी रोबोटिक्स के द्वारा उठाए इस कदम को लोगों ने काफी सराहा है। The goals are next year we are planning for the expansion phase. So we are launching the digital model for the robotics, wherein any student can sit in their home and take up the course and study. So that I think will be a big breakthrough for us, since we wanted to cater to more number of students, inspire more young lives, and take them forward to the perfection. So I think that digital achieving it will be the next immediate goal for us. तो ये था हमारा मास्टरप्रेन्योर विनर स्पेशल का खास एपिसोड, जिसके जरिए हमने आपको दिखाया एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए एक कोर टीम के साथ अपनी बिजनेस की नींव रखी और आज एक बुलंदी पर ले जाना ही इनका मकसद बन गया है। और उनके इस सफल प्रयास को CNBC आवाज ने मास्टरप्रेन्योर खिताब से नवाजा है। Focus, ideate, innovate, enable.